नेक्स्ट 2-3 months के अंदर आपको मेरी वीडियोस के अंदर मैं पता नहीं क्या करता नजर आऊंगा। मुझे छोड़े हैं, मुझे किसी ने देखना है। Your university girls, especially you girls, your own videos where you don't even know that guy, you'll be with that guy doing God knows what because of deep fake. आप समझ के रहे आपके साथ क्या होने लगा है? टिकटॉक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? Fastest subscriber base 100 million in 9 months किया टिकटॉक ने। 100 million in 9 months। आप पूछे तो सही है साहिल साहब, आप चाहते क्या लाइफ से? ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं आप, ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको हर तीसरे दिन पकड़ के ले जाते हैं, वो बैन कर देते हैं ये पॉलिटिशियंस। Why am I hunting for youths? Why? That's the missing piece of the puzzle. Yes, sir. Okay, why am I doing that even if I am doing that? No, I'm not talking against the system, no. दोबारा बताएं मुझे, आपकी आवाज़ ज़रा एको कर गई है। मेरा ख्याल है कोई भी चेंज या इनकलाब यूथ ही लेकर आती है और हमारी मेजॉरिटी पाकिस्तान में यूथ है। तो इनकलाब का क्या करना मैंने? थिंक क्या मतलब है इनकलाब का? क्या मतलब है? आइडेंटिटी, इतना बड़ा लफ्ज इनकलाब, इट्स लाइक मार्वलस, गुड वर्ड्स। नो, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग अगेंस्ट इट। आई वांट टू नो व्हाट यू मीन बाय दिस। इनकलाब लाइक रेवोल्यूशन, लाइक Khomeini? Or are you well read enough to know the French Revolution वो Khomeini level की नहीं थी? Or the Chinese? Have you read about those? Have you really? Yeah. No? पूछ लूँ कुछ? Say, I don't want you to overthink this whole thing. Keep it simple. You guys are at the right age and at the right time. And you're right, sir. You guys are at the right level of IQ. Money's got nothing to do with this. You know what I'm saying? ये 3 factors जब इकट्ठे होते हैं, then you become prime. You become the most ideal candidate. जी sir. No, I'm answering this. मैं तो तीनों का जवाब दे रहा हूँ मैं। जी बताएं। Middle of what? I wanted to build up on your point. आपने शुरू में purpose के बारे में बात की थी. I think we don't know what our purpose is specifically in LSE. Okay, tell me something. एक बात मुझे बताएं. Have you ever seen a school where the students are suffering from that school? Think about it. Mind? Zoom in करके लो ये. Have you ever seen a school where students of the school are suffering from that school? मुझे एग्जाम्पल चाहिए होगी इसके जवाब में, रोशनी डालिएगा इस पे। So most of you guys know what I'm talking about. Some of you guys know exactly what I'm talking about. One or two maybe will tell me what I'm talking about. Most of you guys will never tell me what I'm talking about because that's the indicator of when a student is suffering from the school is studying in. You know what that means? वो ब्रांड का बोझ सर पर उठाए बिठा होता है। जैसे अभी आपको मैं यहां से आईवी लीग ट्रांसफर करूं, all of a sudden you will be overwhelmed. In the first semester, you will be suffering from just the insignia of the school that you're going to go to. समझ रहे हैं ना बात? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, अब आप लोग ना मेरा प्राइम टारगेट क्यों है मैं आपको बताता हूं अभी। माइंड यू शुड हैव गिवन मी क्यों मैन, मैं लैंग्वेज शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, पता है? मेरा नाम साहिल अदीम है। I experiment on groups. I try to change behavior of groups. That's what I do for a living, literally. I carve the psychology of groups. Okay? Companies hire me to do that. They carve the psychology of the demographic to tilt towards their product or their line or wherever they want their products to be. So instead of meeting expectations of customers, we create expectations of customers. That's the next line. Okay? That's what I do. There are 13 people like me who I know who do this, who are in business and in psychology at the same time. Okay? Come on. Now, since I do this for a living, I found out कि चूंकि मैं मुसलमान आदमी हूँ, मुझे पता था कि असली मसला पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स का नहीं है असल में,
असली मसला पाकिस्तान में साइकोलॉजी का है. Most of you girls and most of you boys, they actually claim an identity. And you are going to suffer from that claim, not that identity. And you are suffering from the claim of that identity right now, right here, in this age. इस एज के अंदर जो आपकी कैंपसेस पे गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे हो रही है. समझ रहे हैं? I'm not talking about inside the classrooms or wherever your conferences are held. I'm talking about the dorms, I'm talking about the cafeterias, and I'm talking about outdoors. If that discussion, that problem जो कि आप डिस्कस कर रहे हैं वो अगर NCBMS में भी हो रही है, then you guys are wasting your money sitting there. A very big problem I'm trying to solve. और उसके लिए मुझे डेटा चाहिए. I need to study the group. मैं पता है स्कूल के बच्चों के साथ बात करता हूँ. Most of my time is spent in the school kids. Online ज़्यादातर, but school kids. Because I'm starting to give up कि इस वक्त शायद मुझे रेड लाइन ड्रॉ करनी होती है डेमोग्राफिक की, बिगर चेंज की, वो पाकिस्तान से शायद 20 प्लस में भी देर हो चुकी है. So you guys are going to become Nawaz Sharifs and Imran Khans and Fawad Chaudhry and Sheikh Rasheeds. Because the cycle has been repeated. I can't stop that big wheel to move. I have to take the kids out of the cycle. And वो वाले बच्चे ही बचेंगे जो स्कूल में इस वक्त. You guys are fascinated by an archetype जो कि जिसने भी बना के दी थी, I don't want to go there. वो archetype असल में आपके स्कूल्स में आपकी इस डेमोग्राफिकल कट के अंदर नहीं आनी चाहिए. You guys should not even have known Imran Khan or Nawaz Sharif. You guys should have been busy somewhere else. I'm not talking about Imran Khan and Nawaz Sharif here, okay? That's not my purpose. I'm here with a totally different identity development. For a totally different development of identity. वो मैं बताता हूँ आपको. I'm just trying to, give you some sort of brain juice कि आपको पता चले आपसे क्यों बात कर रहा हूँ मैं और इस तरीके से क्यों बात कर रहा हूँ मैं. Why am I so, what's the word? Concerned. I'm soaking with anguish right now. When I go to, अभी मैं कल या परसों मेरा सेशन था, लास्ट सेशन मेरा कब था? कल था, I think कल सैरी पे था या परसों सैरी पे था. लाहौर में ही था, परसों या कल था. Totally different kind of demographic. You have no idea जिस तरीके से they want to do your age, 20-25 के बीच में. The way thousands of those boys, girls want to make that bigger change, they do not know how. And I come to this side of the city, you guys can know how, but you don't want to. They want to, but they cannot know how. See the big problem मेरे सामने क्या है? See that word? Self-awareness, was there written there? Self-reflection. And I'm especially talking to girls in their 18, 20, 21, 22. This is your age. You want to be your own mother? You want to be your own grandmother? It's okay. Then do nothing else. Because वो naturally होगा. But if you want to evolve into a way bigger person and try and take control of whatever wrong went through, then you got to do it right now. अगले 2 साल 3 साल बाद, too late. Boys, heart burns, man. मेरा दिल जलता शुरू हो जाता है. And I look at boys, what's your name, sir? How do you spell that? Hazik. Hazik, yeah. How old? 18? 20, yeah. So, I see Haziks in Pakistan and I start getting scared now. मुझे डर लगना शुरू हो गया अब. There's a reason for it. मैं दुनिया के 4 मुल्कों में ना रहा हूँ. आपकी एज में मैं पाकिस्तान में नहीं था. But you know what we were doing when I was in my university age? We were speculating the next 100 years के अमेरिका कनाडा में अगले 100 सालों में बड़ा मसला क्या आना है. So I want to solve that problem. Not for Allah Rasul. No. We were trying to be rich. Just like you guys want to be rich. If I can create a product and I want to try and solve that bigger problem. और उस वक्त मुझे पता क्या उस वक्त इंफॉर्मेशन थी. I'm talking about what, 2007-8? क्या इंफॉर्मेशन थी सोचिए जरा. मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन.
कौन से 3 मसले रह गए हैं हमें मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन में? अब आप लोग हो रहे हैं मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन. You know, at that time there was no Elon Musk landing on Mars or whatever SpaceX program going on right now. So just say, you guys are traveling fast. अभी आपको पता भी नहीं आपके साथ क्या होने लगा. I hope you know LSC में, you know, क्या करने लगी AI आपके साथ. You guys are not going to get the kind of opportunities in jobs that most people have enjoyed for the last 2 decades. आपकी तो जरूरत भी नहीं रही ज़्यादातर. अब तो AI ने आके आपको रिप्लेस कर दिया. The uniqueness of a human mind, जो कि जरूरत थी मुझ जैसे बंदे को भी. I'm a CEO of 2 companies. I require people based on their uniqueness. For example, my content writers, they really have to be super unique. I tell them, they write, I look at it, I get inspired. Yeah, you're directing me, you're managing me and my next move. Last night मुझे पता चला मेरा एक content writer है, कहता सर मैं तो 4 महीने से लिख ही नहीं रहा हूँ कुछ. I'm just chat GPTing this whole. I'm like, are you kidding me with this? मैं लोगों को तेरी तारीफें करता फिर रहा हूँ. And I'm like, yeah, तो करें ना सर. What do you think gave you that file? Somebody has to direct ChatGPT. You know, next 2-3 months के अंदर आपको मेरी वीडियोस के अंदर मैं पता नहीं क्या करता नजर आऊंगा. मुझे छोड़े हैं, मुझे किसी ने देखना है. Your university girls, especially you girls, your own videos where you don't even know that guy, you'll be with that guy doing God knows what because of deepfake. आप समझ के रहे आपके साथ क्या होने लगा है? You know what deepfake is, right? Let me give you some stats so you would know. मैं ये वाले stats कहीं और दे नहीं सकता हूँ, किसी को समझ नहीं आएगी क्यों बोल रहा हूँ मैं. What is the number 1 subscriber base for TikTok country-wise? पता है आपको इस बात का? TikTok का पता क्या होता है? क्यों पता है? See, that's my question. आपको पता है लेकिन okay. You know what the TikTok का record है ना? TikTok का record किसने तोड़ा है? Fastest subscriber base, first 100 million in 9 months किया TikTok ने. 100 million in 9 months. उन 100 million में 38 पाकिस्तानी हैं. You've never done TikTok, right? आपके पास आपने कभी बनाया तो नहीं होगा ना? Okay, yeah. Because TikTok is addressed by a certain socioeconomic class psychology. You know that? Where do you think I'm getting the stats from? I don't have TikTok. TikTok publishes it. आपको पता है कि किसने रिकॉर्ड तोड़ा है और TikTok का? 29 days में 100 million subscribers. कौन? Yeah. So you guys are like, how you guys are going to be, you know, looking to invent new ways to find a job. Forget the job. Find ways to get a job. नई कंपनी खुलेगी. They're not going to get you a job. They're going to get you more ways to find a job. And I don't care about your job. I swear. This is because मेरा कोई और angle है दुनिया को देखने का. I don't really care whether you have more money, less money. I care about whether you have more vigor, less vigor. And if you have more vigor, more zest, more grit, I'm going to put you in and I'm going to grind the hell out of you and make you a professional. That's the kind of guy I am. And most of the guys at my age are. They don't really care कि डिग्री. मैंने आज तक अपने प्रोफेशनल में से किसी की डिग्री पूछी नहीं. 3-4 महीने के अंदर पता चल जाता है बंदा कितने पानी में है और उसको मैं I'm going to tell them, if you have enough IQ, you can do anything. Literally. But the problem is, मैं आपको इस वक्त करियर के लिए आपकी आइडेंटिटी क्लास की बातें करने लगा हूं. आपको मैं यहाँ पे इस्लाम, एंड ऑफ टाइम, दज्जाल आने लगा है, all of those, रोजे रखा करो, नमाज पढ़ लो, all of that stuff. You guys already know that. You have YouTube. I'm here to tell you that there's a bigger problem that I require you for. Only you can solve that problem.